चलो कोई बात। हाँ जी, so evaluate this integral. This is the integration from -1 to 2x raised to power 5 d raised to power minus mod of x cube. मतलब derivative with respect to, we are integrating x raised to power 5 with mod of x raised to power 3 and the answer must be this. ये हमें prove करना है, right? अब जितने इसमें आप देखिए -1 to 2, अब मॉड है, मॉड जो है वो ब्रेक होगा बेटा। अब आपको पता है मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। इट मींस आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा -1 to 0 पे और 0 की। देखो जहां इंटरवल पॉजिटिव है वहां तो फंक्शन ने वैल्यू पॉजिटिव ही देनी है, वहां तो सोचने की बात ही नहीं है। 0 to 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब 0 to 1 में, अब जब x नेगेटिव है, ठीक है, जब नेगेटिव है तो बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, ये देखो -x मींस आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपका क्या बनेगा, d ऑफ -x³। अब 0 to 2 पॉजिटिव इंटरवल है तो इसमें फंक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो ये जो आपका ये मॉड है वो पॉजिटिव में ही रहेगा x³। बस अब आगे इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। This is x is to power 5 into x is to power 3। जो डेरिवेटिव लिया, this is 3x के, यहाँ पे थ्योरम आपकी अप्लाई होएगी RS इंटीग्रल एंड R इंटीग्रल, राइट, प्लस, और इधर माइनस एडजस्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। सो देन 0 to 2, this is x is to power 5 again 3x here. So now you can evaluate this integral by use. That is quite easy, right? Next example is integration -2 to 3 in mod of x into d of mod of x। अब देखो यहाँ फिर नेगेटिव दिया हुआ है और mod of x है, पता है अभी mod of x ने नेगेटिव, जो mod of x ने -x वाली वैल्यू जो है वो कहाँ देनी है, जब हमारा डोमेन नेगेटिव आ रहा है। सो देयरफॉर दिस इज -2 to 0, आप इसको ब्रेक करेंगे, plus 0 to, this is mod of x into d of mod of x, right? So what you will get here, -2 to 0, here you will write -x, here you will write d of -x, plus here you will write only x, and here you will write d of x. So d of x is simple derivative of x, minus minus plus, -2 to 0. So ultimately, how will you solve it? Same beta exactly that way. So this is from -2 to 0. This is x dx simple. This is 0 to 3. This is again x dx. So you can solve, you will get your answer, right? Now the next question is, अब इसी question में ही change कर रहे हैं। Same question में जो फर्स्ट फंक्शन है आपका, जो एग्जैक्टली f of x आपके पास पड़ा है, हम उसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो ऐड कर देंगे। अब फंक्शन जो है वो बन गया, नाउ द फंक्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 to 3, this is the integral part of mod of x into this is the function, right? So पहले mod के लिए हम इसको ओपन करेंगे, 2 to 0, you will write here this one, integration 2 to 3, integral part of mod of x with respect to the function mod of x. So अब इसमें what you will get, I'm going to the next screen, नेगेटिव है सो यहाँ आएगा -x, right, and derivative of minus, integration 0 to 3, 0 to 3, and here is x and
डी ऑफ क्लियर। एंड डी ऑफ एक्स बेटा ये तो सिंपल ही है, 0 to 3 यू कैन सॉल्व इट इजीली। कैसे हो सकता है ये? अब ये डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स का मतलब है माइनस आपका बाहर आ गया, दिस इज -2 to 0 एंड हियर इज माइनस दिस डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3. Now let it be the first integral. This is I1, the total integral is I and this is I2. So ये minus of I1 है. So हम सबसे पहले हम I1 solve करेंगे. What is I1? I1 was integration -2 to 0, then minus of x d of right. अब जहां पे इंटेग्रल पार्ट है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, -2 to 0 dx plus then here is 0 -2 to 1, sorry, -2 to -1 and -1 to 0 and here we have same. अब बेटा हमने इंटेग्रल पार्ट की बात करनी है, वहां हम क्या लिखते थे? वहां हम लिखते थे जो छोटा था, क्योंकि x अगर देखो जहां अगर मैं बात करूं 0 to 1 ये x है क्योंकि x पॉजिटिव था बेटा 0 और 1 में, ठीक है। आपने मिनिमम वैल्यू इसकी ये वाली वैल्यू लिखी तो आंसर कितना आया आपका यहाँ पे 0, इंटेग्रल ऑफ 0। यहाँ पे उल्टा चलेगा क्योंकि x की जगह पे क्या है -x है। फंक्शन की जो फॉर्म है वो चेंज होगी, पहले x एक फंक्शन था वो इंक्रीजिंग था, -x है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी आपकी -2 to -1 एंड माइनस ऑफ -1 dx। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी, प्लस -1 to 0 और यहाँ आएगा -0 dx। So this comes out to be -2 to -1 and here is 1 into dx and that comes out to be 0. So this is equal to integration -2 to -1 into dx. So that comes out to be, अब इसको solve कर लेंगे, that comes out to be x and here is -2 -1. So this is -1 minus of -2. This -1 plus 2 that is equal to 1. So this is a I1 integral. Now what about I2? What was I2? I2 was integration, that is quite simple. अब इसको break कर देंगे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 पे। हाँ जी, अब x एक बेटा आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है इस डोमेन में 0 to 1 में, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी इसकी? लेस देन वैल्यू, जो आपकी इंटेग्रल वाली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। यहाँ क्या आएगी बोलिए 1, इंटेग्रल पार्ट ऑफ 1, ठीक है, प्लस 2 to 3 इंटेग्रल पार्ट। ना, यू विल नॉट राइट द इंटेग्रल पार्ट, यू विल ओनली राइट 1 हियर, क्योंकि आपने उसकी पूरी वैल्यू बता देनी है इंटरवल में। दिस इज 2 dx। So you can solve it, then you will get the answer. The final answer will be, the final answer comes out to be 2 by taking I is equal to minus I1 plus I2, you will get the answer. That's it. Next question, evaluate. Integration 0 to 2x d alpha x, where alpha x is given to be x when 0 less than x less than or equal to 1 and 2 plus x when 1 is less than x less than or equal to 2, right? So integration 0 to 2 x d alpha of x। देखो इंटरवल चाहे x का है या f का, दोनों ही फंक्शन है, ठीक है, और ये ब्रेक कहाँ पे हो रहा है 1 पे, ब्रेक करेंगे इसको। What's the value of alpha x? Alpha x की वैल्यू 0 to 1 इंटरवल में कितनी है? कितनी है बेटा? 1 है, ठीक है। सो x है तो d ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे। 1 to 2 इंटरवल में कितनी है? 2 plus x है,
ठीक है. So derivative x, you are differentiating x with respect to x means x square by 2 over the interval 0 to 1, and you are differentiating अब 2 plus x का differentiable क्या आएगा, dx ही आएगा. Again you are differentiating, ये आएगा x square by 2, it is from 1 to 2. आप पहले इसका डेरिवेटिव लिखेंगे. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x into 0 प्लस dx, ये आएगा. इस तरह से लिखेंगे. ठीक है. फिर अगला स्टेप होगा and that comes. So there are some questions that will be done by you. I hope both type of the comparison between relation between R integral and RS integral, and by the we can do the questions by partial integration formula. So I am writing some of the questions that will be done by you. This is evaluate this integral. Number 1, number 2. So this is quite easy. With the derivative of sin x, you will take the derivative of sin x as cos, and you will evaluate the integral, right? Next in the category is next question, next example number 18 in my book. Let alpha is equal to x plus 7, f is equal to sin x for all x belongs to the closed interval a to b. Prove that integration a to b f dx exists and find its value. And find its value. Prove the result. Prove the result that you use. हमें प्रूव करना है इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है. बेटा इंटेग्रल तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है जी, बाय पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर्मूला. So what's the proof? Since f, okay, we shall use the following result. If f is continuous on the closed interval a to b and alpha has continuous derivative. Okay, on the closed interval a to b, then so they have taken the result of continuous derivative, because we know that integration a to b f d alpha is equal to, this is integration. बेटा ये RS इंटेग्रल है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, R इंटेग्रल में. कैसे, जब आपने अल्फा का डेरिवेटिव ले लिया, जब आपने अल्फा का डेरिवेटिव ले लिया तो बन गया f अल्फा डैश डी. दैट्स व्हाई दे हैव रिटन, हमने वो थ्योरम यूज किया यहाँ पे, अल्फा एज अ कंटीन्यूअस डेरिवेटिव, नॉट द पार्शियल इंटीग्रेशन फार्मूला वी विल डू. सो देयरफॉर f of x is equal to sin x. ये क्या फंक्शन है, ये डेफिनेटली बेटा इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा. तो दे आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b, और अल्फा x क्या है, अल्फा x है x plus 7. डेफिनेटली बेटा हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव ऑन a b, डेरिवेटिव ऑन a b. therefore integral a to b sin x derivative of x plus 7 exist करेगा, and which is equal to, therefore it is equal to, what is the derivative of this, this will remain d of x, and this is integral is minus cos x from a to b, so the answer is cos a minus cos. This is the answer, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am.